The year was 2020. COVID had hit the world and the world stood still. A time when routines were broken, lives were shaken, and survival took on new meaning. Amongst those shifts were our lives too. Nitika and Tanvi. Nitika, in Gurgaon, when everything paused, movement became her medicine. Fitness, discipline, strength training, they weren't just routines, they were anchors. Tanvi in Germany. When silence felt deafening, meditation became her only way forward. Anxiety, loneliness, and breakdowns made mental well-being not a choice but a necessity. These weren't lifestyle decisions. They were survival tactics. Hi, I'm Tanvi, Hi, I'm Dr. Nitika. and this is our channel TNT, Therapy by Nitika and Tanvi. A space we have created with one simple intention to help you reconnect with your body, with your mind, and with yourself. Because we've lived it. We have rebuilt ourselves from scratch, not to be perfect, but to become whole. So, what can you expect here? We'll talk about burnout, anxiety, self-doubt, hormones, fitness, and a lot more. She is a philanthropist, founder of a non-profit on mental health awareness, and I'm a dentist turned nutritionist and fitness coach. Different paths, but one purpose: to share what helped us so that it can help you too. But before we take you along this journey, let us take you through our own journeys first. So shall we? स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, इतनी शाय थी कि इवन इफ़ आई न्यू द आंसर मैं कभी अपना हाथ नहीं उठाती थी. मुझे एक नाम दे दिया गया था, शाय बेबी. पब्लिक स्पीकिंग का इतना डर था कि मैं खुद को स्टेज पे इमेजिन भी नहीं कर सकती थी. मेडिकल लिया, डॉक्टर बन गई, शादी भी हो गई, बट फिर भी कुछ मिसिंग था. मेरी आइडेंटिटी मेरे नाम से रिलेट ही नहीं हो रही थी. हमेशा लगता था और भी बहुत कुछ है जो मैं कर सकती हूँ. 35 की एज में मैंने डिसाइड किया कि अपने हर एक चैलेंज को कॉन्कर करना है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो टू व्हीलर राइडिंग हो, चाहे वो हाइट का फोबिया हो या पानी का फोबिया हो. मैंने सोच लिया था मुझे अपने हर एक फियर को चैलेंज करके उसे कॉन्कर करना है. 2017 में मिसेस दिल्ली एनसीआर का एक ऐड देखा मैंने, समझ गई कि शायद यही एक चांस है मेरे लिए वेयर आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. आई डिसाइडेड कि मैं डांस एज अ टैलेंट शो कर दूंगी. मैंने 2 हफ्ते तक एक ही सॉन्ग पे डांस प्रैक्टिस किया और सेलेक्ट हो गई, ऑडिशन भी हो गया एंड टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में भी आ गई. एंड आई गॉट द टाइटल ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल. बस वो एक टाइम था जहाँ पे मुझे खुद पे यकीन हो गया कि मुझ में कुछ नहीं, बहुत कुछ है और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल का सबटाइटल मिलने के बाद मैंने खुद पे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया. रैम शोज़ किए, वेब सीरीज़ की, एक्टिंग की, मॉडलिंग की. फिर कोविड आ गया. कोविड में सारे मेडिकल प्रैक्टिसेस बंद थे. कोविड वो एक टाइम था जब मैंने अपने आप को फिटनेस में एज अ प्रोफेशन डालना स्टार्ट किया. बचपन से ही फिटनेस में थी बट इतना ज़्यादा नहीं थी कि उसको एज अ प्रोफेशन देख सकूँ. 2021 में मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया और उसके बाद न्यूट्रिशन का कोर्स किया एंड आई गॉट द जॉब. इवन एज अ डेंटिस्ट आई टुक दिस जॉब. उसके बाद मैंने हर एक चैलेंज को कॉन्कर करना स्टार्ट किया. एट द एज ऑफ 36 मैंने बाइक चलाना सीखा एंड आई डिड माई लॉन्गेस्ट राइड फ्रॉम गुड़गांव टू गोवा. लद्दाख अभी बाकी है. उसके बाद हाईएस्ट बंजी जंप की, क्योंकि हाइट का बचपन से ही बहुत फोबिया था. हमेशा बचपन से एक सपना आता था कि मैं मरूंगी तो कहीं ऊपर से गिर के मरूंगी. सो बस उस फियर को निकालना था. नाउ आई एम 39 एंड आई हैव डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग अगेन. वो एक पानी के फोबिया को दूर करने के लिए आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग. हर एक स्टेप एक नया वर्जन बनाता गया. ये जर्नी ईजी नहीं थी बट रियल थी. Till now, I have transformed around 1500 clients and I know there is no looking back. And अब life का बस एक ही purpose है कि whatever knowledge I have gained and whatever experiences I have, I want to help you all with that. अगर मेरी वजह से if I can bring that 1% positive impact in your life, I'll be the happiest. That's the whole purpose of this life. Jim Carrey once said that he wishes everyone achieves everything that they've ever wanted and they've ever dreamt of, so that they get to know that it is not the answer. मैं बचपन से एक ओवर अचीवर थी. स्कूल हो या कॉलेज, डिबेट्स, पोइट्री, म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग,
everything. Winning was not just something that felt good, it felt like the only option to live. And since as a child I was always achieving a lot, no one ever questioned if I'm really okay from within. And this is something that happens quite a lot with a lot of people. From within, I always had high functioning anxiety, which often showed up as nausea, increased heart palpitations, and even to extreme cases, I'd get body aches and fall sick and couldn't really function before an exam. But I became really good at masking all of this. तो मुझे पता था कि स्टेज पे अगर मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, तो मुझे कैसे एक टोन में बोलना है सो दैट किसी को पता ना चले कि अंदर से आई एम एंग्शियस. सोसाइटी में हमें सिखाया जाता है ना दैट अचीवमेंट्स आर एवरीथिंग. सो बस उसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पे लाइफ चल रही थी. सो आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी. आई वॉज अ किड व्हेन आई हैड माई ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस and I basically understood everything about every psychological disorder or thing or behavior that I was inclined towards, that I was performing, but I still thought, stress के साथ ही एक achievement comes like a byproduct. So life kept going on. I did my undergrad in physics and I went to do my first masters from VIT Vellore. That was in Tamil Nadu and वहाँ पर मैंने पहली बार अपनी लाइफ का एक पर्पस महसूस किया जो कि किसी भी अचीवमेंट से वैसी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी मुझे पहले. I volunteered for this non-profit called Juvenile Care. वहाँ पर we went to a blind school जहाँ पे सारे के सारे बच्चे वहाँ पे सिर्फ तमिल में बात करते थे और मुझे तमिल नहीं आती थी. All I had to do there was spend time with the kids, have food with them, chill with them and make sure that they're happy and they're smiling and they're having a good time with me. Now इतना ही हमारा transaction था verbally, yet when I made so many children smile, so many children start playing with me, बस मेरी इतनी टूटी फूटी तमिल से आई फिगर्ड कि यार इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे कभी किसी चीज़ को अचीव करने में नहीं मिली, कभी किसी चीज़ के पीछे भागने में नहीं मिली. You know that feeling that you get just by being selfless and making another person smile? I felt like I found my deeper purpose that day. In 2018, I decided to move to Germany for research and to study even more. So while I was in Germany, I was doing my research and I was also a choreographer. But 2020 came and COVID hit and everything sort of went silent. And that is when my mental health took a huge setback, worst setback ever in my mental health. I figured कि I had to really pause and change the way I was functioning from within. That is when I got introduced to a couple of healing modalities. My sister actually pushed me to learn them. I thought कि ठीक है चलो भाई learn करके देखते हैं, let's see what happens. I just started meditating regularly. I started reading more. I started exercising, I started eating differently. I made sure that I could find better alternatives to every thought process. So I even seeked therapy and seeked a lot of help and focused all the attention within. So I made sure that my inner world is as satisfied before I seek satisfaction from the outside world. And that is when I figured out that there is a way out of living without pressure, without stress. And there could be better coping mechanisms. डियर ज़िंदगी में एक डायलॉग है जब वो दिमाग के डॉक्टर के बारे में बता रही होती है एंड वो हाउस हेल्प जो होती है आलिया भट्ट की, वो कहती है कि दीदी अगर ऐसे डॉक्टर होते तो सबको जाना चाहिए ना उनके पास. तो आई फिगर्ड कि यार अगर ऐसे इसका वे आउट है टू लिव फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, टू नॉट बी स्ट्रेस्ड एंड देन बी प्रोडक्टिव, सो देन ऐसे क्यों ना जिया जाए एंड ये चीज़ बाकियों को क्यों ना बताई जाए. सो जस्ट विद दैट इंटेंशन आई डिसाइडेड टू मूव बैक टू इंडिया. I left my research in artificial intelligence क्योंकि मुझे लगा human intelligence पे काम करने की थोड़ी ज़रूरत है. Today I have my own organization, a non-profit, which is working through a couple of cities in India, and we take care of a couple of special schools. We have a team of psychology enthusiasts, college students who are also studying psychology, and I taught the same healing modality to hundreds of clients since then. Because I know what it felt to feel so lost, but I also know how it feels to feel the kind of healing and to feel healed. And that has become my purpose ever since. As a famous quote says, that he who has found the reason why will also figure out how. And so that how is probably this channel, which could be a means to expand what I feel is important in this world. So what is this channel about? Something that we have learned in our lives is that health is holistic. To be mentally fit,
physical fitness is the key. And for physical strength, you have to have a strong mind. And science backs this up. A Lancet Psychiatry study shows that people who exercise regularly have 43% fewer poor mental health days than those who do not exercise at all. So mental and physical health, it's not separate. They're inseparable. When you focus on both, you increase your immunity, you reduce stress, and even slow down the aging process. It's true. Moving your body improves your mood, energy, skin, and protects you against lifestyle diseases like diabetes, heart issues, and even depression. And this is exactly what our channel is about. We'll show you recipes, teach you tips and tricks and basics of meditation and a lot of exercises that can help you on a day-to-day basis. So whether you are a student, a corporate employee, an entrepreneur, or a homemaker, we are making wellness simple, real, and doable. So let's begin.